اپنے گھر سے تھوڑے بہت پیسے اٹھا لو ادھر سے. I definitely want to say to people, say no to Pakistan. ایسے چوک کہڑے صاحب نا بھی پر دسو نا پھر میں انہیں دسو نا. It's a shame it's just got brushed under the table. There was no legal charges. We just want the money. We've got orders from Bukhari. Just pay and, you can go back. Otherwise, it's going to get nasty. There is a lot of mental torture. This person is very dangerous. He's the director of FIA and, he's at the top of the food chain and he wants paying. FIA is an organization. I would call it's a mafia. They have their own court. So they'll have their own FIA judge. So, the whole court system is managed by FIA. It's a shame it's Islamic country about these people are saying we'll rape your wife if you don't pay. Witness some real evilness with the FIA. ظلم ہمارے پترا نال کتنے میں اتنے پیار اس نے ہوئے وے پیراں نے چھتریاں پر زخم ہوئے وے مارنے دے کیا ہوا کھاراں نے پٹھیاں بچیا جو کہ ہمارے پترا نال کتا اتنا بہت ظلم کیتا دوست بنی تا ظلم کیتا اتنا اپنے پاکستانی حق دوے پر اتنا ظلم انہاں کول تو یودھیاں نے ملک چنگے نو تے گوریاں نے ملک اساں چنگایا کوشش کرسن مری جائے تے پیسہ پھسی کنا اتنا خطرہ ہے نا ایئرپورٹ ایروں باہر نکل سا تو ان لوگوں کو خطرہ ہے قتل کرنے منٹ نہیں لانے. جو طلت ہے اس کی بہت دور تک اپروچ ہے, تقدیر ہے اس کی بہت دور تک اپروچ ہے. انہوں نے کہا تھا جب بھی آپ واپس آؤ گے آپ لوگوں کو گورنمنٹ کے لوگ اٹھا لیں گے, ایجنسی کے لوگ اٹھا لیں گے, نام بھی سننا نہیں چاہتے ہیں پاکستان کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں CNI نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ موین احمد. آج ہم ایک خاص موضوع پہ بات کرنے والے ہیں. سب سے پہلے ہم ایک فقرہ سنتے ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں, لیکن جب ایک خاص تناظر سے جب اس خاص طبقے پہ ضرب لگائی جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ایک ملکی ترقی جو ہے وہ رک سی گئی ہے. پاکستان میں اس وقت جتنی بھی انڈسٹریز ہیں وہ ساری کی ساری زوال کا شکار ہے. ملکی اکانومی صفر ہو چکی ہے, ایکسپورٹس بند ہو چکی ہیں, لیکن اس میں جو ایک واحد امید ہے وہ اوورسیز پاکستانی کی ریمیٹنسز ہیں جو کہ سال 2023 اور 24 میں تقریباً $28 بلین انہوں نے پاکستان میں بھیجے ہیں, جس کی وجہ سے جو ملکی اکانومی کو سہارا مل رہا ہے. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو پاکستانی حکومت ہے, جو پاکستان کے ادارے ہیں, ان کو چاہیے کہ ان جو ایک واحد آسرا رہ چکا ہے اس پہ زیادہ سے زیادہ انویسٹ کریں, ان کو انکریج کریں کہ یہ پاکستان میں مزید ریمیٹنسز بھیجیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف تناظر میں مختلف حصوں میں ان پہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں, ان کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. اسپیشلی جو پاکستان کی پبلک ہے وہ تو چاہتی ہے کہ یہ لوگ پاکستان میں آ کے انویسٹ کریں تاکہ جابس پیدا ہوں اور کاروباری مواقع شروع ہوں, لیکن کچھ اداروں کی جانب سے کچھ ایسے عناصر بھی موجود ہیں جو کہ صرف پیسے بٹورنے کے چکر میں ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. تو آج ایک ریئل سٹوری لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ ایک ایسا شخص جو کہ پاکستان میں یتیم خانہ چلا رہا ہے, وہاں پہ یتیم بچوں کی خدمت کر رہا ہے اور بے شمار انویسٹمنٹ بھی کر رہا ہے, کاروبار کی بھی نیت رکھتا ہے وہاں پہ. تو اس کے باوجود جب وہ پاکستان جاتا ہے تو پاکستان کے لوگ, پاکستان کے ادارے اور پاکستان کے چند بزنس مین اس کے ساتھ کرتے کیا ہیں. تو ان کی ایک ریئل سٹوری آج ہم سے آپ سے شیئر کریں گے, ان سے بات بھی کریں گے, ان سے جانیں گے کہ ان کی کیا ایسی موٹیویشن تھی کہ وہ پاکستان میں جا کے کاروبار کرنا چاہتے تھے. تاکہ ہم سب جانتے ہیں ایون کہ پاکستان میں لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود یہ پاکستان گئے اور پاکستان کے ساتھ کیا کیا ہوا اس بارے میں ہم مزید گفتگو تفصیل سے کریں گے. ان کے پاس جائیں گے, ان سے مزید بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ پاکستان میں ایکچوئل میں ہوتا کیا ہے. I was just, for our audience, I was trying to, acknowledge or educate the people who are thinking that, Pakistan, we have to go to Pakistan. Pakistan is a very blessed country, and to somehow it is, but for some people, they're having a bad experience for that. So in that case, I'm here. So just to reveal your story, that you can tell the people who are still willing to go to Pakistan, wanting to invest in Pakistan, and even our new generations, the parents especially, they wanted their children to go back to learn that culture, to be in that culture, so they will have some roots in it. So first of all, I would just like to ask you, why did you open the orphan house in Pakistan? I wanted to give something back to Pakistan. I mean, when I was a child, I always was taught that don't forget your roots. So my parents told me not to forget my roots, so I felt like giving something back to Pakistan. And I was in Pakistan when the earthquake happened in 2005 in Muzaffarabad. So
I was there at the scene, and I seen what the people went through. So I wanted to give something back to my own country. I see it as my own country, but it didn't pay up for me, and I definitely want to say to people, say no to Pakistan. That's the kind of campaign I want to put out there because of what I've been through. So this is from a real life experience. Like I'm back here in England, but I still don't feel safe because I've had people reach out to me, and it's not a nice thing to live through. You know what I mean? When justice not been delivered, there's still something pending out there, and it's a shame it's just got brushed under the table. या सो नाजरीन जो वर्साची खान है बेसिकली इनका डडली से ताल्लुक है, जो बर्मिंघम का एक नवाही इलाका है, और ये पाकिस्तान में यतीम खाना भी जहाँ तकरीबन 100 के करीब बच्चे भी वहाँ पे उनकी केयर करते हैं। तो इनका यही कहना है कि मैं पाकिस्तान में इसलिए जाके मैंने वहाँ पे फलाही काम शुरू किया ताकि मैं अपनी जो रूट्स है, जो मेरी जड़ें हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान को मैंने कुछ पे बैक करना है। तो इस वजह से इन्होंने पाकिस्तान में यतीम खाना भी खोला, वहाँ पे बिजनेस भी किया, वहाँ पे जाते भी हैं, और जो इनके साथ हुआ वहाँ पे उसके बारे में हम इनसे जानेंगे कि कैसे हालात थे और किन किन लोगों ने क्या क्या इनके साथ किया, और अब जो इतने नेगेटिव ख्यालात इनके पाकिस्तान के बारे में हैं, क्या वो वाकई दुरुस्त हैं, क्या वाकई उन लोगों को कन्विंस कर सकेंगे कि ये पाकिस्तान कोई भी इन्वेस्टर पाकिस्तान में ना जाए। सो द डे दे अब्डक्टेड यू फ्रॉम बहरिया, यू सेड दे हैव टेकन यू टू अटक सम पुलिस स्टेशन और सम अननोन प्लेस. So you've said you have been tortured. So what kind of torture, first of all, if you can tell us, because you have been through a lot. Yeah. So about the torture, and from the day one till the day, they didn't do any FIR, you've said. So when FIR got filed, and did they show you any legal evidence or something? No. Just to make sure that you are being abducted. Apart from AK-47, any legal charges on you? There was no legal charges. I asked, you've kidnapped me. This is a kidnap situation. I understand, but they said, look, we just want the money. We've got orders from Bukhari, Shahzad Bukhari. So somebody tell you straight on your face? Yeah. They said he's too big of a fish. Just pay, and you can go back. Otherwise, it's going to get nasty. So yeah, with the torturing, they electrocuted me. They electrocuted me on my feet. Day one. Day two, they waterboarded me, and they also used a water hose and they filled my lungs up with water. And I passed out a few times. So that's the, you could say, the physical torture they done. And then there's a lot of mental torture that was happening. Your kids are not safe, your family's not safe. There's a lot that goes around. In the end, I was making phone calls and they was getting what they wanted, and that's the way it was, because I was clearly told this person is very dangerous. He's the director of FIA, and he's at the top of the food chain, and he wants paying. So when does FIR get involved? So there was no FIR. There was some mention that my family have secured through the British High Commission a FIR against the police who kidnapped me, and it was a 365 charge, and they were worried about that because it was a very serious offence if proven. So I heard that my family have got an FIR on them. Then they tried to make their own FIRs to justify the actions. नाजरीन, आपने सुना कि इनको अटक एक नामालूम मकाम पे ले जाया गया और वहाँ पे तशद्दुद किया गया, इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए, पानी के अंदर इनको डुबोया गया, इनके लंग्स में पानी भरा गया थ्रू पाइप। तो इन तमाम तशद्दुद के बावजूद इन्होंने कॉल्स की, तकरीबन 5 करोड़ रुपए की जो कैश रकम दी गई, और तकरीबन इनकी फैमिली ने इनकी बाजियाबी के लिए तकरीबन 1 मिलियन पाउंड जो है मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ मौके पे दिए एज अ रिश्वत के तौर पे, और उसके बाद ये कहीं बाहर है। लेकिन अब हम इनसे ये भी जानेंगे कि जब इनके FIR, ब्रिटिश हाई कमीशन जब इन्वॉल्व होता है, FIR दर्ज होती है, फिर जब इनको FIR के हैंड ओवर किया जाता है तो FIA इनके साथ कैसा सलूक करती है, और FIR के अंदर जो उनकी जो अदालतें हैं, उनका जो वकील है, वकील और अदालत के दरमियान जो गुफ्तगू होती है, जो जिस्मानी रिमांड दिया जाता है, उसके बारे में इनका एक्सपीरियंस कैसा था? So when FIA got you on their cell, so what kind of mental torture they're giving you, and when you said that they're giving the remand, the court gave the remand to the police or FIA officials, so you said that they have some mutual communication between them, so the justice system does not work? No, it definitely doesn't work. How can it work when FIA is an organization? I would call it's a mafia.
they have their own court, so they'll have their own FIA judge. So the whole court system is managed by FIA. It's not an independent court, so you can't get justice through that system. And whenever they had me in the car and we was driving to the court, they would ring the judge and say, "Please give us remand. We're almost there. A little bit more pressure, and he's going to pay. So we need another 2 days remand, another 3 days remand." So the remand was already agreed prior to me being presented to the judge. That's how it works in Pakistan. So in the cells, you must have seen the other peoples who are there. So what were those people? Yeah, basically they was extorting for money, whether it's a woman or a male. They didn't care. I seen them beat people up in front of their partners. I seen the officers say rude stuff to their partners, to the females, and it's a shame. It's a Islamic country about these people are saying, "We'll rape your wife if you don't pay," to these people, and the people were trying to arrange money. They were seriously struggling. And alhamdulillah, I'm brought up in the UK. It's a different situation for me, but I witnessed some real evilness with the FIA, and they will constantly torture you from the morning to the night, non-stop. And they will say, this remand means your body is in our control. We can do what we wish. That's what remand means. Okay, so did you got an opportunity to hire your own solicitor for your case in the court? I did get an opportunity through friends who recommended certain solicitors, but everybody's on the raise there. A case like this, where a British person's involved, everybody's thinking pounds, money, dollars, so you just get stuck. You get stuck because you don't know who's with you. Your solicitor will go and do a deal on the other side, and then he'll try to screw you up. So you got to be very careful. But I didn't get any justice at all. I mean, my solicitor is probably one of the best solicitors somebody can ask for, but he was working with the other side. Unfortunately, it's a shame because he didn't do anything positive for me. The only thing that positive happened for me was from the British High Commission, and I'm very grateful for them for their constant interaction to check on my welfare, kept me alive. If it wasn't for the British, I would have been sold 2 or 3 times over and probably killed. Okay. सो नाजरीन, इनका ये भी कहना है कि जब इनको FIA में अदालत में पेश किया जाता था तो जो इनके साथ ऑफिशियल्स थे FIA के, वो जज को पहले ही फ़ोन करके बता देते थे कि हम ये बंदे को, मुलजिम को आपके पास लेके आ रहे हैं, हमें इसका जिस्मानी रिमांड चाहिए। और जिस्मानी रिमांड के बाद जो है इनको पहले ही बता दिया जाता था कि आपने जज को ये नहीं कहना कि मुझ पे तशद्दुद किया गया, वरना दोबारा आप हमारे ही कस्टडी में आओगे। तो लिहाजा एक मेंटल टॉर्चर रहा इनके साथ। उसके बावजूद इन्होंने पेमेंट भी की है, सोलिसिटर्स भी हायर किए, लेकिन जो अदालती निज़ाम है, जो इंसाफ का निज़ाम है पाकिस्तान में, उसके बारे में पाकिस्तानी भी अब बहुत हद तक जानते हैं, और अब ओवरसीज पाकिस्तानी भी इसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं। जो उनको दिलासे दिए जाते थे कि आप पाकिस्तान में आए, इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान में बेहतरीन कारोबारी मौके मौजूद है, लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से जिन लोगों ने आपको सिक्योरिटी देनी है, जब वो सिक्योरिटी देने वाले ही आपको अबडक्ट करने लग जाए, आपसे रिश्वत खाने लग जाए, और इवन के जो सेल्स में आप मुलाकात के लिए अगर आपने जाना होता है तो मुलाकात का भी एक खास स्टोरी है। मुलाकात के हवाले से भी जानते हैं कि वो उसका प्रोसेस क्या है। अगर फैमिली मेंबर्स आपसे मिलना चाहते हैं तो उनको किन किन मराहल से गुजरना पड़ता है। और ये स्टोरी यहाँ पे ही ख़त्म नहीं होती। जब इनको जुडिशल किया गया, जेल हुकाम के हवाले किया गया, तो जेल के अंदर एक नई ही दुनिया है, क्योंकि जेल जो है वो मुजरिमों के लिए होती है, लेकिन यहाँ पे मुलजिम भी है, मुजरिम भी है, और जिस पे शक की बुनियाद पे जिसको भी, चूंकि वो एक अपनी रियाया है, अपनी एक हुक्मरानी है जेल के अंदर, तो वहां पे भी एक प्रोसेस है। उसके बारे में भी जानेंगे कि जेल के अंदर अगर कोई आपसे मुलाकात करने के लिए घर वाला आता है, कोई फीमेल्स आती हैं, तो उनके साथ जेल के हुकाम और जो जेल का अमला है वो क्या सलूक करते हैं। सो when people, your family must be visiting you, your friends and family will be there, so what were the steps they have to go through just to meet you, or just to send something to you in terms of food or whatever? I think it was a bit difficult because me being a British overseas person, they thought it's money everywhere, so they would charge my family like up to 1 lakh rupees per visit for a half an hour visit, and if they wanted to send food, there'd be like 10,000 rupees to send the food in. So they was extorting my family for money. And how long you've been in the jail? So I was in the jail roughly about 10 weeks.
Okay, and for Yeah. each visit, they're paying 100,000 rupees. Each visit. So if I had 2-3 family members, that's 200,000-300,000. So 2 or 3 lakh rupees a day. I would get literally 3 visits a week. Mm-hmm. Yeah, sometimes 4 visits. Sometimes I get daily visits. But at least I got the visits. But on the other hand, my family was suffering. The situation was already bad with these kidnappers, but the prison system wasn't fair. They made it even worse. So when your family was visiting you, Mhm. what were your feelings at that time? Because you must have seen them after a long time. Yes, being like the provider for my family, I didn't want to see them pay money on my behalf. It wasn't right. It didn't feel good. So, I would tell them, don't come to any more visits, so I'll cancel your visits. And there has been times where I did cancel the visits. I refused to go, but I was dragged out myself because the officers wanted to make money. They know that my family are coming, so he must attend the visit. Mm-hmm. So I was forced to have visits so they could get paid. Yeah. So your family suffered a lot in this. So इनका ये भी कहना है नाजरीन कि पर विजिट एक पर्सन जो है अगर आपको मिलने आता है तो वो 1 लाख रुपए जेल हुकाम को देगा, जो कि वो अंदर ही आपस में वो बांटेंगे। और अगर कोई 2 लोग हैं या 3 लोग हैं तो पर पर्सन 1 लाख रुपए आपको विजिट के पे करने पड़ेंगे। और आपने खाना पहुंचाना है अपने किसी जो प्यारे की तरफ, तो 10,000 रुपए आपको अपने खाने के अलावा पे करने पड़ेंगे ताकि खाना गरम गरम उनके पास पहुंच जाए। सो वर्साची खान, व्हेन यू वर इन court, you have hired a solicitor. So tell us, enlighten us, who was your solicitor, and when you've been into the court in front of the judge, so there is a process, to be in front of the judge. What was the process, and who people were involved, and were you satisfied? No, definitely wasn't satisfied. I thought I'll get justice in the court system. I'm safe now, having been through all the kidnap situation. I thought at least I'm in the real justice system now. And there was no justice. It was just as bad as being kidnapped. My solicitor, I changed a few solicitors. I had Shah Havar. He's a well-known personality, and one would expect good things from this guy, but there wasn't. He did nothing positive for me, and he was just on a raise. Unfortunately, he took a very extortionate fee from my family, and again, he thought he's a British guy, and let's rob him. So yeah, Shah Havar, and I spoke to a lot of political people. I'm from the area where we support Chaudhry Yassin. We've always been his supporters, his well-wishers, and Chaudhry Sahab, I'd like to say thank you to him because he come to see me a few times, and I really appreciate that. And my friend Rajesh Anwaz, these people were there for me, but Bukhari Sahab was obviously the king above us, so So nobody can do anything. Nobody could do anything because FIA is the mafia. These are the people that target you, and they will extort you. If you show that you've got money in Pakistan, they will watch you, they will plan, and they take everything off you. These are the real evil people there. Right. जी, इन्होंने इस्लामाबाद के बड़े बड़े वकीलों को भी हायर किया। जिस तरह वो बता रहे हैं कि शाह खावर नाम के एक साहिब हैं जिन्होंने इनसे ब्रिटिश होने की वजह से काफ़ी भारी फीस भी ली है, और इनसे जानेंगे कि वहाँ तक कैसे पहुँचे और उसके अलावा क्या क्या प्रोसेस इनके साथ हुआ है। सो you said you've hired Shah Khavar. So who introduced you to Shah Khavar, and how much did he charge you for your case? Obviously, I didn't have much control because I was already behind bars, so I couldn't control what was happening. Raja Parvez Ashraf introduced Shah Havar to my family. He said he's a very good solicitor. He recommends him, and Shah Havar's base rate is like 2 crore, but he'll charge around about 60 lakh, which he charged my family. To later I find out that was quite extortionate. It was not his fee, actual fee for the general public. No, definitely not. I mean, for my type of case, his fee would be like in the region of 15 lakh maximum, but he charged 60 lakh. जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ वर्साची खान की वालदा के पास, और इनकी वालदा से जानेंगे कि जो कि इनके बेटे ने बहुत सफ़र किया, तो कि ख़वातीन भी घर की जो हैं वो इस मामले में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, तो इनसे जानेंगे कि इनके क्या तासुरात थे और इन्होंने इस पूरे दौरानिए में कैसे अपने आप को संभाला। जी बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। तो बताइएगा कि जब वर्साची खान की आपको खबर मिली कि वो उनको उठा लिया गया है,
तो कहाँ पे थी आप, कैसा महसूस किया? मैं कश्मीरी सा मिगी हफ्ता को नहीं भाई ने ते मिगी मैं परेशानी जी पे भी था। मैं दुए बच्चे क्या हाँ टेलीफोन कोई नहीं किता ने अज ही रहना नहीं होना मिगी दिहाड़ी 2-3 बारी टेलीफोन करने होने वो आना मसरूफ है अपने कम्में इत्ते तुस हमें परेशानी कर रहे हो। मिगी जिला पता लगा इसा जने भाई ये जमातरे इथों गया था मैं इसी टेलीफोन किता मैं पता करा टेलीफोन नहीं चाने मुंडे माड़ी गल कोई नहीं हुई हफ्ता हो गया आना मैं इत्थे पहुंची हाँ तो तुस तंगी फिक्र ना करो तो अस जी की कढ़ाई किनसा कोई नहीं हो शरीफ फिर कुथा है या तक कुथा ना पऊँ जुल्म मारे पुत्रा नाल किते ने मैं जा महीने बाद मैं गई ने इसकी मिलने ते कोटा बिच इतने इतने पैर इसने होए वे पैरों ने छतरियां पर जख्म होए वे। मैं पूछा कौन है तो मैं तकी किंदा इसने लात है नहीं पूछा जे तू की मारने रे चक्या होया कै नहीं खारानी पिट्टियां बच्चा खुले मैदाने विच बेहता पिट्टियां दा बड़ा दुआ बड़ा सा घर ओ कसीडी उठी आह उठ अंदर जुल मैं अंदर माड़ा जाने ला जंबीर ही मरना सारे बच्चों ती लाडला रखा उसा तो शुरू थी लाडला रहा हक ही नसीब दी कुसा नाल मार ना करिया अपने को बचाई ना बचाई उसा ते जुल्म ना बचा करिया। मिगी नहीं पता चंगा सा मंदा सा भैड़ा सा बुरा सा मगर जो कि मारे पुत्रा नाल किता इन्ना बहुत जुल्म किता दोस्त बनी तो जुल्म किता ने तो शुक्रिया तो मेहरबानी मैं थैंक यू कर रही हाँ चौधरी हसने रानी तो शाहनवाज रानी जिन्हें हमारी उसला मदद की बहुत सारी सपोर्ट की ने घर भी राजा शाहनवाज ऐशना रहा अच्छे सोने तरीके नाल 3 हफ्ते माड़े ते आसमान त्रुटी सिर पिया रहा मेघलांड सा कदा ये नसीबत भी माड़े रू जासी ये परेशानी भी जासी इस कदर नहीं सी असा पर बनती भी कोई जा नहीं छोड़ी मैं धार चाहे बगैर बचा जो कि इतिहास आ इसने को लुटी लसी किंदा ने किन्नप भी पूरा भी किन्ना कराई रखा पता खबर खार को नहीं लगी वे जा हक नाल और सस कम करने लायक ठेकेदार मुजफ्फराबाद है ना वो इसने नाल सा थोड़ा हौसला सही हो इसी तना रहा इतना अपने पाकिस्तानी हक दुए पर इतना जुल्म तसुतम दोबारा पाकिस्तान भेजना चाहेंगी इन्हें? बच्चे कितना जान देनी तो मैं जा सा बच्चे की ना जान देनी इन्ना कोल तो योधिया ने मुल्क चंगे नु तो एक गोरिया ने मुल्क असा चंगा आ जिस मुल्क विच रहने तो इंसाफ ही देने असा की हर सहूलत भी असा तो की भी ना तो इंसाफ ही इन्ना लोगों को था मगर साढ़े गरदार है जितने मुसलमान थे ना गरदारी नाल भरे वे तो मुनाफक पुणे नाल भरे वे दुए को पैसा तकसन तो उसकी मालूम मारने की कोशिश कर सने मरी जाए तो पैसा खसी किन्ना है करतूता सारे पाकिस्तानिया ना बचा मंगी चाहिए कि ना जे दोस्त बनी फ्रेंड बनी तो नाल टुरने पे तो नाल होई तो गरदारी करने पे ये मुसलमाना ना तरीका था कोई नहीं। फिर एक इलाके ने रहने ले लोग का डडियाल की तो नाड़ की कोई फर्क नहीं आसा इलाके ने लोग का मारी सारी नस्ल जितनी इन्होंने नस्ल थी सी उस डडियाल विच आंडी गुजरी के अस डडियाल ने रहने वाले लोग ने तो इन्ना उठी इन्ना कि ये दुख लगा जे इसने कोल पैसे हुई ये तो पैसा तो है कौन सा इस जो कमाया लोगों की खुआली गया गरीबा गुरबिया की दे गया अपनी जात ने इस पैसा को नहीं रखा मकान दो पर कर्जे कढ़ाए अग्गा पिछा कोई दोस्तां यारां खुआलेस कुछ मदरसे में लाएस बस है कुछ सुना रहा जे मैं सिया पैसा बचाई रखता ना बे
जो मरी गए उन्होंने को पूछो हाँ कितना खड़े ने नाल कितना खड़े ने, दफा करो क्या कर सा पैसे की। थाना दिता वा जरा कोई उसी वा काम में सी। पाकिस्तान में मजीद कोई खतरा आपको महसूस नहीं होता? बहुत खतरा है, इतना खतरा है ना, एयरपोर्ट आरू बाहर निकल सा तो इन्ना लोगों को खतरा है, कड़ी गल्ला खतरा है। ये लोग सारे पास है इन्ना जाल फसाए वे, इन्होंने कोई FI विचा कोई कसा विचा कोई कसा विचा, तो गरीब लोगों की अनजान लोगों की इन्ना पैरों ने जुत्ती समझा वा, जिथा होया उथा जुत्ती हेठ मली किंदे। इस तरह इंसानियत नहीं होनी बच्चा, इंसान तो बड़ी मुश्किल हो जानी कि मुसलमान भैन भरा या भावें कोई भी है तो मुसलमान आ ना, काफर तक ना, काफरान इलाके बड़ी जा सुन तो फिर भी देखभाल कर सुन, जे मुसलमान साढ़े इलाके विच आए वे तो असा की इतना इन्ना को खतरा आ। हुण बच्चे नूं है तो अपनी जायदाद भी थी, मुल्क भी अपना आ, सारे उस मुल्का ने पैदाश आ, मगर इन्ना लोगों को बहुत डर लगना तो बहुत खतरा आ। कातली लोग के कतल करने मिनट नहीं लाने। भरे बाजारा विच एक होटला विचों इन्ना खाई खाना तो लिखता बाहर तो इन्ना हमला करी लपड़ी अखी बन्नी सनिया बगाई मारिया ने गड्डी विच, कोई खबर नहीं कुदर खड़िया ने कुदर ने खड़िया। इतना भी जुल्म तो नहीं होना। जी बिल्कुल नाजरीन, आपने सुना कि जो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी अपने आप को पाकिस्तानी कहलाने पे फ़ख्र महसूस करते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तानी पाकिस्तानी का भाई है, लेकिन हालात इस तरह के हो चुके हैं कि पाकिस्तान में जो कसम पुरसी की हालत चल रही है, जो भाग दौड़ मची हुई, कि पाकिस्तानी पाकिस्तानी पे यकीन करने का रवादार नहीं है। वो किसी गैर मुल्क में किसी गैर मज़हब के शख्स पे ज़रूर भरोसा करेगा, लेकिन पाकिस्तानी पे भरोसा करने के रवादार लोग नहीं रहे। तो इस सारी सिचुएशन के जो जिम्मेदार हैं वो यकीनन हमारी गवर्नमेंट है, हमारे इदारे हैं जो कि इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, उन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। अगर सपोर्ट ना भी करें, लेकिन जो खामोशी है वो भी एक किस्म का जुर्म ही है। इस किस्म के वाक़यात पे जब आप रेजिस्ट नहीं करेंगे, इन लोगों का साथ नहीं देंगे, कुछ ऐसी अथॉरिटीज़ नहीं बनाएंगे, जब तक कि जो पाकिस्तानी पाकिस्तान में वापस आता है, कुछ इन्वेस्टमेंट लेके आता है या अपने घर वालों से मिलने के लिए ही आता है, क्योंकि जो वर्ड ऑफ माउथ है ये एक बहुत बड़ा टूल है कि जब लोग आपके बारे में बात करते हैं, जब आपके मुल्क के बारे में क्या बात करते हैं, तो उस बात को देख के बाकी लोग भी मुतासिर होते हैं। क्या वो पाकिस्तान जाना चाहेंगे? क्या वो अपनी फैमिलीज के साथ पाकिस्तान जाना चाहेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इसी के साथ हम कोशिश करेंगे कि मजीद कुछ डिटेल्स भी आपसे शेयर करें, ताकि जो ओवरसीज में रहने वाले लोग हैं वो पाकिस्तान में अगर जाना चाहते हैं तो वो कैसे जाएं और वो क्या करें। सब लूटने वाले हैं। जब मेरा भाई अगवा हुआ तो गवर्नमेंट के लोगों ने अगवा किया था। जो तलत है ये एक आम लोगों की तरह है, आम फैशन है। ये कदीर है, डिडेल का रहने वाला है, इसका शोरूम है और ये इसकी अप्रोच है पुलिस तक, तो गवर्नमेंट के दारों तक अनलीगल काम करता है। ये लोग चर्स वगैरह फीम शराब का काम करते हैं। तो इन लोगों ने हमारे भाई को अगवा किया था। तो वहां मुझे पता चला कि जो तलत है इसकी बहुत दूर तक अप्रोच है, जो कदीर है इसकी बहुत दूर तक अप्रोच है। कि रात में इनके लोग जो थे ये हमारे भाई के घर के इर्द गिर्द गाड़ियों में फिरते थे। तो हमें अपनी जान का भी खतरा था, अभी हमें मजीद जान का खतरा है। हमारी प्रॉपर्टी है पाकिस्तान, हम उधर जा भी नहीं सकते। कि जब भी हम जाएंगे, इन्होंने कहा था जब भी आप वापस आओगे आप लोगों को गवर्नमेंट के लोग उठा लेंगे, एजेंसी के लोग उठा लेंगे। तो ये एजेंसी के लोग किस लिए हमें उठा लेंगे? हमने क्या किया है ये तो हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम लोगों ने किया क्या है। हमारे भाई ने क्या गुनाह किया था? पाकिस्तान इसको बुलाकर अगवा किया है। कोई भी हमारी कंप्लेंट पे गवर्नमेंट ने कोई भी काम नहीं किया। हमारे पास सब कंप्लेंट है मेरे पास, जो मैंने की थी अपने भाई के लिए। तो वो बहुत मुश्किल टाइम था हमारे लिए और मेरे भाई के लिए। हमारी फैमिली पूरी डिस्टर्ब हो गई थी। हम 3 बहनें पाकिस्तान में थी। तो हमारी अम्मी इतनी बीमार हो गई थी कि पता नहीं था कि अम्मी वापस भी हम साथ लेकर आएंगे या नहीं। तो अल्लाह पाक का बहुत करम है कि हमारा भाई हमारे पास वापस आ गया। तो इंदस्ती जो है ना, बाकी लाइफ हमारी, हम तो नहीं जाना चाहते हैं पाकिस्तान, तो ना भी हम फंडिंग करना चाहते हैं पाकिस्तान में।
कोई भी बिजनेस तलक नहीं रखना चाहते हैं। हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं पाकिस्तान से, इसका नाम भी सुनना नहीं चाहते हैं पाकिस्तान का। जी नाजरीन, आपने देखा, हमने बात की वर्साची खान की वालदा से, इनकी बहन से। इन लोगों ने बहुत सफ़र किया है। इनकी सिस्टर ने बताया कि उन्होंने पाकिस्तान का कोई इदारा ऐसा जहां से तवक्को थी कि इंसाफ मिल सकता है वहां का उन्होंने नहीं छोड़ा, लेकिन हर इदारे ने अपने अपने हिस्से में अपना हिस्सा लिया है उनसे, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हुई, इंसाफ कहीं नहीं मिला। अल्टीमेटली आखिरकार जिन पे एतमाद किया गया वो ब्रिटिश हाई कमीशन था, जिनकी वजह से इनका कहना है कि हमें आज़ादी मिली और वापस बरतानवी सरजमीन पर आकर इन्होंने ज़मीन को चूमा। तो अब हम वर्साची खान से फाइनली ये पूछना चाहेंगे कि ये इतना एक बहुत बड़ा जो एक हैपनिंग इनके साथ हुई है, एक बहुत बड़ा डरावना ख्वाब है बेसिकली, क्योंकि इस किस्म की सिचुएशन के बाद जो इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट है वो बहुत डैमेज होती है, जिसका कोई मदावा नहीं है। कोई भी आप किसी को ये नहीं कह सकता कि तुम्हारी वजह से मुझे मेंटल टॉर्चर हुआ। पाकिस्तान में इस किस्म की चीज़ों का तस्वुर भी बिल्कुल नहीं है। तो वर्साची, प्लीज इफ यू कैन टेल अस, आफ्टर you've been through a lot, what's your next plan? How would you deal with Pakistan? Are you going back to Pakistan having business? What will be to the orphanage home? You What- know, these things are quite close to me, and I'm obviously heartbroken with the situation. And I really wish that I get some kind of justice out of this, and that will restore my faith back in Pakistan. And of course, if justice does prevail, I will return to Pakistan. And until then, is clearly say no to Pakistan. Until then. ओके, सो से नो टू पाकिस्तान। जिस तरह हम किसी चीज़ का बाइकआउट करते हैं तो कहते हैं से नो टू इसराइल की प्रोडक्ट्स के बारे में हम बात करते हैं। तो पाकिस्तानी हुकाम से और पाकिस्तान में जो जो लोग हमें सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनसे ये इल्तमास है बजरिया हमारे चैनल के कि इनको इंसाफ दिलाने में जहाँ तक आप अपना किरदार अदा कर सकते हैं वो ज़रूर करें, क्योंकि अगर इनको इंसाफ मिला तो इनके जैसे और भी बहुत से पाकिस्तानी हैं जो कि पाकिस्तान में किसी मुश्किल का शिकार होंगे या वो पाकिस्तान जाने से डरते हैं। तो उनके लिए एक हौसलामंद बात होगी कि हाँ, अगर वर्साची खान को इंसाफ मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं मिल सकता, और हम पाकिस्तान में सरमाकारी क्यों नहीं कर सकते। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम जो दुनिया के सामने 1 अरब डॉलर के पीछे भीख मांगते हैं, तो उससे बचने के लिए जो हमारे अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के इन्वेस्टर्स मौजूद हैं पाकिस्तानी, उनको हम क्यों यूटिलाइज नहीं करते। तो आप सबसे भी इल्तमास है, और तमाम जो इदारे के लोग हमें सुन रहे हैं जो भी इस चीज़ में इन्वॉल्व थे, तो आपसे गुजारिश है कि कोऑपरेटिव हो, इनके साथ ताउन करें और इनको इंसाफ दिलाने में इनकी मदद करें। बहुत शुक्रिया।